everyone. Today I am going to start with the topic enzyme regulation. The regulation of enzyme activity. So, in the living cells, in the living system, in the living organisms, hundred of different enzymes catalyze reaction occur simultaneously. कितनी रिएक्शंस हैं, जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए मेटाबॉलिक सिस्टम हो गया, इन सब के एक्टिविटीज़ में मल्टी स्टेप प्रोसेस चलती जाती हैं और बहुत सारे एंजाइम्स एक्टिवली इसमें काम करते रहते हैं. अब बात होती है कि इतने सारे एंजाइम एक साथ काम कर रहे हैं तो इनका रेगुलेशन कैसे होगा. तो वी विल डिस्कस दिस थिंग इन दिस topic. So, in the living cells, in the living system, hundred of different enzyme catalyze reaction occur simultaneously. These reactions must be regulated for the proper functioning of the living system. The regulatory enzyme exhibit increase or decrease catalytic activity in response of certain signals. So, if we want to define this, the regulation of activity, then we can say that the process by which cell can turn on or turn off or to modulate the activities of the various metabolic pathway by regulating the activity of the enzyme. It is called as regulation of enzyme activity. यानी कि ऐसा प्रोसेस, सेल का एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा सेल का स्विच ऑन हो जाए, स्विच ऑफ हो जाए, या फिर उसकी एक्टिविटी मोल्ड हो जाए, मॉड्यूलेट हो जाए, या मॉडिफिकेशन हो उसमें जब जिसकी रिक्वायरमेंट हो, जिस मेटाबॉलिक पाथवे के लिए जिस एंजाइम की, जिस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो, वहाँ पर वो एंजाइम एक्टिव फॉर्म में आ जाए, और जब प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ना हो तो वो एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाए या वो स्विच ऑफ हो जाए, टर्न ऑफ हो जाए और अपनी एक्टिविटी ना आते. तो ऐसी प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच द सेल कैन टर्न ऑन, टर्न ऑफ और मॉड्यूलेट द एक्टिविटी ऑफ द various metabolic pathway by regulating the activity of enzyme is called as the regulation of the enzyme activity. Enzyme regulation will permit the changing need of the to meet its energy and resource demands. What is regulatory enzyme? In a cellular metabolic activity, many enzymes work together in a sequence to carry out the given metabolic process. For an example, if we talk about the carbohydrate metabolism, there are multiple processes. One process is the glycolysis. In glycolysis, the glycolysis is the 10-step process. Each step is catalyzed by a specific enzyme. For an example, in the glycolysis, glucose is converted into a glucose 6-phosphate in the first step, and that is carried by a hexokinase, that is glucokinase enzyme. Further, again the glucose 6-phosphate is converted into a fructose 6-phosphate, and so on 10 subsequent step of the reaction, 10 step of the reactions, metabolic reaction of the glucose and it converted into a pyruvate in the glycolysis process. In such case, where more than one step are involved, the reaction product of the one enzyme reaction act as a substrate for the next enzyme, right? पहले अगर ऐसी कोई reactions हो रही हैं जहाँ पर मल्टी स्टेप प्रोसेस हो रही हैं, तो वहाँ पर पहले स्टेप का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट काम करेगा एज एन सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम ऑफ द सेकेंड स्टेप. इस तरीके से इन द मल्टी स्टेप एंजाइमेटिक प्रोसेस where will be one enzyme which will be responsible for the overall rate of the process. This is the rate limiting enzyme and it is called as the regulatory enzyme. Now, रेगुलेटरी एंजाइम रेगुलेशन मैकेनिज्म जो है 5 प्रोसेस की तरह हो सकता है सेल्स के अंदर. सो वी कैन से दे आर द मेनली 5 टाइप ऑफ एंजाइमेटिक रेगुलेशन मैकेनिज्म इन द सेल. फर्स्ट इज एलोस्टेरिक एंजाइम रेगुलेशन. इसका मतलब एलोस्टेरिक एंजाइम रेगुलेशन, एलोस्टेरिक मतलब होता है एलो और स्टेरिक. एलो मीन्स अदर, स्टेरिक मतलब साइट. एंजाइम के अलावा, एंजाइम की कैटालिटिक साइट के अलावा जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है उसके अलावा एक और साइट प्रेजेंट है, वहाँ पर वो बाइंड करके उसको रेगुलेट करे, दैट इज कॉल्ड एज एलोस्टेरिक साइट. एलोस्टेरिक साइट
allosteric enzyme regulation, in which the enzyme having a allosteric site other than the active site and responsible for the regulation of the enzymatic activity. The next one is the reversible covalent modification. Reversible covalent modification में क्या होता है? It is one of the main regulatory mechanism where the phosphorylation and dephosphorylation of the enzyme occur with the help of the energy or without energy use. The third one is the proteolytic activation of the enzyme. Proteolytic यानी कि proteolysis भी कह सकते हैं. The cleavage of the peptide from protein and inactive gymosins are converted into a active one. The next one is the feedback regulation, जहाँ पर feedback के through enzyme की activity को regulate किया जाएगा. The fifth one is the regulation by the isozymes. Now we will see one by one each thing. First one is allosteric enzyme regulation. The enzymatic activity can be activated or inhibited through the non-covalent interaction of the enzyme with metabolite other than the substrate. This form of control is termed as the allosteric regulation. Allosteric protein contain distinct regulatory sites and multiple functional site. राइट सबस्ट्रेट के अलावा एंजाइम में जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा उसके अलावा जो अलग से साइट है जहाँ पर एक्टिविटी हो रही है दैट इज कॉल्ड एज एलोस्टेरिक साइट. In 1950, it was found that the threonine dehydratase, the first enzyme of the isoleucine biosynthesis pathway, was strongly inhibited by the end product of the isoleucine. In this, the feedback mechanism, feedback inhibition was being seen. The committed step in the biosynthesis pathway is inhibited by the ultimate end product of the pathway, where the A is converted into B, C, D, E and finally F. The end product of A is F. The F was controlling as the feedback, controlling the conversion of a product with the inhibiting the enzyme E1. So, the here E1 is the regulatory enzyme. The feedback inhibitor F bears like a structural similarity to the A, the substrate of the regulatory enzyme E1. F act as F जो है act on the binding site distinct from the substrate binding site. Now, we can understand this, the allosteric regulation by the activation and the inhibition. Here are two figure. इसको हम समझते हैं कि जो हमारा एंजाइम है वो दो तरीके से यहाँ पर है, एक है टेंस फॉर्म में, एक है रिलैक्स फॉर्म में. दिस इज टेंस फॉर्म और इनएक्टिव फॉर्म, और वी कैन से रिलैक्स्ड फॉर्म रिलैक्स फॉर्म में है. यहाँ पर हमारे पास है एक सबस्ट्रेट साइट और ये हमारा एक अदर से हो गया एलोस्टेरिक साइट. Similarly, here also a substrate site, ये substrate, and we have the allosteric site. अब क्या होता है कि एलोस्टेरिक साइट में अगर ये हमारे पास एलोस्टेरिक इनहिबिटर है, कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसा मटेरियल जो यहाँ पर आके एक्ट करेगा जिसको हम बोलेंगे इनहिबिटर और निगेटिव इफेक्टर और निगेटिव मॉलिक्यूल. इस स्टेट में जब यहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड कर चुका है, यहाँ पर जो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट है यहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड हो चुका है और ये जो है आके बाइंड हो जाता है. जब ये आके बाइंड होता है तो ये क्या करता है, इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. यू कैन सी हियर व्हेन देयर इज अ एक्टिव साइट, right, this is the enzyme, the substrate come and act on the substrate site, this active site, it forms a product and it have a high affinity for the enzyme when there is nothing to the allosteric site. कुछ भी उसके अलावा जो भी है वहाँ कुछ नहीं है, ठीक है. लेकिन जैसे ही यहाँ पर एक मॉलिक्यूल आता है और इस allosteric site पे बैठता है, ये यहाँ पर सी in this allosteric site, then what happens
क्योंकि ये एलोस्टेरिक साइट पे बैठने के बाद ये जो हमारा सबस्ट्रेट का साइट है, दिस एक्टिव साइट गेट चेंज, द कंफर्मेशन चेंज अकर्स, जिसकी वजह से ये सबस्ट्रेट इस पे बैठ नहीं पाता है, सबस्ट्रेट की एफिनिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है. सो वी से दैट कि दीज इनहिबिटर्स आर द नेगेटिव इफेक्टर और नेगेटिव मॉलिक्यूलेटर एंड दे चेंज because of these this binding there is a change in the conformational change in the enzyme जो है प्रोटीन का बना हुआ है, टर्सरी स्ट्रक्चर है, उनके कंफर्मेशन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाता एंड द प्रोसेस इज इनहिबिटेड. दे हैव द लो एफिनिटी टूवर्ड्स द सबस्ट्रेट एंड हेंस द product is inhibited. So an enzyme subjected to the allosteric inhibition is active in an uncomplexed form which has an high affinity for its substrate S. Binding of an allosteric inhibitor stabilize the enzyme at the low affinity for the enzyme due to the change in the conformational change in the enzymatic active site. Further, अब दूसरी तरफ चलते हैं जहां पर अगर यहां पर तो ये इनएक्टिव हो गया, टेंस फॉर्म में हो गया, सिंथेसिस रुक गई. नाउ एज एन एक्टिवेटर, स्टिमुलेंट या फिर रिलैक्स्ड फॉर्म की बात करते हैं. तो रिलैक्स फॉर्म में क्या होगा, व्हेन देयर इज अ एलोस्टेरिक साइट एंड द एक्टिव साइट. एक्टिव साइट पे जब एक्टिव साइट एज it is not able to take a substrate and it bind to the substrate. तो ये क्या करते हैं, when there is a addition of a modulator or we can say a positive modulator or a positive effector, a substance, कोई भी ऐसा substance जो यहाँ पर आके ऐड होता है, ये क्या करता है, इसमें conformational change करना शुरू कर देता है एक्टिव साइट पे. एक्टिव साइट पे conformational change करेगा जिसकी वजह से affinity increase हो जाएगी towards the enzyme and this substrate will be come and combine and it will give a combination of allosteric यहाँ पर add हो चुका है and substrate will add it and it will result in the product. So in this way addition of the allosteric activation, the addition of an enzyme subjected to the allosteric activation is inactivated in its uncomplex form which has low affinity for the substrate. Binding of the allosteric allosteric activator, this will call as activator or positive modulator, stabilize the enzyme in its high affinity form resulting in the enzyme activity which increase the product synthesis. If you talk about the Km constant in the tensed form, the Km constant जो है, Km constant यहाँ पर जो है Km constant increase होगा, whereas in the activation the Km constant decreases because it shifted यहाँ पर, it shift the saturation curve towards the higher substrate concentration and here it shift the saturated curve towards the left or towards the lower substrate concentration. The allosteric protein shows the property of cooperative, that is activity at one functional site affect the activity at the other. राइट, कोऑपरेटिव हो रही हैं. एक बार जब सबस्ट्रेट जुड़ रहा है, यू कैन सी हियर, जैसे ही एलोस्टेरिक ऐड हो रहा है, कोई भी मॉड्यूलेटर ऐड हो रहा है, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रेट बाइंडिंग की एफिनिटी या तो डिक्रीज कर रहे हैं या तो इंक्रीज कर रहे हैं. दे आर एक्टिंग एज अ कोऑपरेटिव. द एक्टिविटी ऑफ द वन फंक्शनल साइट अफेक्ट द एक्टिविटी एट द अदर. अ स्लाइट चेंज इन द सबस्ट्रेट concentration can produce substantial change in the activity. Their kinetic do not obey the Km equation. So if we plot the curve between velocity and substrate concentration and enzyme velocity, the graph will be sigmoid rather than the hyperbola. The two type of cooperativity has been seen. The first one is positive cooperativity. Ligand binding at one side facilitate the bonding of the other side on the same molecule, and the negative one,
the ligand binding at the one side inhibit the binding of the other side on the same molecule. The regulatory enzyme for which the substrate and modulator are identical are called as homotrophic, whereas the modulator is the molecular rather than the substrate, then the enzyme is said to be a heterotrophic. The regulatory enzymes are also subjected to an activation process by a metabolite which belongs to another metabolic pathway, which leads to cross regulation of the metabolic. Allosteric enzyme typically have the oligomeric organization. They are basically oligomeric in nature. They are composed of more than one polypeptide chain, and each subunit has binding site for the substrate as well as the distinct binding site for the allosteric effectors. The regulatory effects external on the enzyme activity are achieved by the conformational changes. The second one is the reversible covalent modification. The covalent attachment of a molecule can modify the activity of enzyme by any other protein. A donor molecule provides the functional moiety that modifies the property of the enzyme. Here it is, they basically work by the phosphorylation. For an example, here the enzyme serine and OH, which is phosphorylated in the presence of ATP and it is converted into ADP in the presence of enzyme kinase, and it is having the addition of phosphate. The phosphate is added. The phosphorylation by the enzyme kinase. Phosphatase क्या कर रहा है? The phosphatase, another enzyme is phosphatase, which is removing the phosphate group from the molecule, by the hydrolysis of the side chain phosphoester bond. So, the molecule, some of the enzymes are active here, in the reversible covalent modification, some enzymes are active in the phosphorylated and some are inactive in the phosphorylated state. For an example, we can say that we have an example of glycogen phosphorylase, which is active at the phosphorylated state. Phosphorylation will increase the glycogen phosphorylase activity and it will stimulate the glyconeogenesis. What is glyconeogenesis? That is degradation of a glycogen into a glucose. इसके विपरीत में हमारे पास एंजाइम होता है ग्लाइकोजन सिंथेटेज, विच इज एक्टिव इन द डीफॉस्फोराइलेशन स्टेट. So, the reversible covalent bond modification regulate the enzyme activity by the phosphorylation and the dephosphorylation. Some enzymes are active in the phosphorylated state and some enzymes are deactivated or inactivated in the phosphorylation state, or some are active in the phosphorylated state and some are active in the dephosphorylated state. The another type of mechanism is the proteolytic activation of enzyme. Proteolytic activation, the enzyme regulated by the proteolytic cleavage method are produced first and inactive and which are called as zymosin. Zymosin are inactive precursor of the enzyme. For example, proteolytic enzyme जो digestive system में पाए जाते हैं, जैसे आपका trypsinogen, it is converted into a trypsin and trypsin is converted trypsin is which is responsible for the activation of chymotrypsinogen and activation of the procarboxypeptidase. Here they are the certain organs, जैसे कि हमारे पास जाइमोजन है, ट्रिप्सोनोजन है, एक्टिव फॉर्म इसका ट्रिप्सिन है विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पैंक्रियास. पेप्सिनोजन जाइमोजन है and the active form is pepsin which is secreted or the originated by the stomach. Coming forward, the feedback regulation. The feedback regulation and feedback inhibition दो different चीजें हैं. Don't get confused. The feedback regulation is different for the feedback inhibition. It is a type of enzymatic regulation. The feedback regulation is the type of enzymatic regulation.
the end product of the enzymatic pathway inhibited by the end product. The end product reduce the concentration of the enzyme by inhibiting the synthesis of a new enzyme molecule. For an example, reduction of HMG coenzyme A reductase enzyme by the dietary cholesterol. Next, control of availability of the enzyme. कैसे कंट्रोल होगी इनकी अवेलेबिलिटी, कैसे काम होगा. और जो आपका फिफ्थ वाला था आइसो एंजाइम, वी विल सी इन द आइसोजाइम चैप्टर. The control of availability of the enzyme, and as enzyme are the protein in nature, they are synthesized from the amino acid under a gene control and degrade back into amino acid after its action. Enzyme quantity depends upon the rate of the enzyme synthesis and the rate of the degradation. The enzyme degradation, intracellular protein degradation occur both lysosomal and proteasomally. The process may be energy dependent or independent, right? It can be selective or non-selective degradation. Many housekeeping enzymes are degraded by the lysosomal degradation. The short-lived enzymes are degraded by the extra lysosomal mechanism. So, the control of the enzymatic availability, because in each every step the in each and every step the enzyme are being used. तो एंजाइम के सिंथेसिस हो रही है, साथ साथ में ये डिग्रेडेड भी हो रहे हैं, तो इनको बॉडी से रिमूव भी करना है. इनका डिग्रेडेशन कैसे होता है ये डिपेंड करे, ये हमें देखना है. तो टू तरीके से 2 स्टेप्स हैं जहाँ जैसे कि ये डिग्रेडेड होते हैं, या तो ये डिग्रेडेड होंगे लाइसोसोमली या फिर प्रोटियोसोमली डिग्रेड होंगे. एंड द डिग्रेडेशन, जो इनका डिग्रेडेशन का प्रोसेस है, दे मे बी एनर्जी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, राइट. लेट अस सी वन बाय वन. प्रोटियोसोम्स डिग्रेडेशन. प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन में क्या होता है? प्रोटियोसोम्स आर द लार्ज यूनिट सब यूनिट multi subunit protease that degrade ubiquitin target ubiquitination of a protein, or we can say ubiquitin targeted protein in an ATP dependent manner. Ubiquitin is the small basic peptide of 46 amino acid found in the eukaryotic cell. प्रोटोसोम्स जो हैं डिग्रेडेड प्रोटीन इनटू अ शॉर्ट पेप्टाइड दैट आर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड बाय द cytoplasmic exopeptides. So what they do basically here, the ubiquitin targeted protein क्या करेंगे, ATP डिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ATP डिपेंडेंट मैनर में प्रोटियोज एंजाइम के साथ मिलके इन बड़ी प्रोटीन्स को छोटी प्रोटीन्स में यूबिक्टिन में कन्वर्ट करते जाएंगे. यूबिक्यूटिन क्या है, ये क्या करेगा, यूबिक्यूटिन जो है यूबिक्यूनेटेड करेगा प्रोटीन्स को, उनके साथ अटैच, प्रोटीन के साथ अटैच होगा. प्रोटीन टू बी डिग्रेडेड, जो प्रोटीन को डिग्रेडेट करना है उनके साथ अटैच होके यूनिक्यूटेड प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड हियर द प्रोटोसोम विल कम एंड इट विल एंटर द प्रोटीन एंटर इनटू अ प्रोटोसोम्स. प्रोटोसोम्स के अंदर प्रोटीन इंटर करने लगेगी. व्हेन इट विल बी जो प्रोटोसोम्स एंड यूबिक्यूटिन जो है इसमें रिसाइकलिंग है एंड दे विल कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अ स्मॉल अमीनो एसिड फ्रेगमेंट्स एंड इट विल बी amino acid fragments we can say, or into a protein fragment which is called as a peptide में इनको डिग्रेडेट कर देगी. नेक्स्ट वन इज लाइसोसोमल डिग्रेडेशन. लाइसोसोमल डिग्रेडेशन क्या होता है? लाइसोसोम कंटेन डिफरेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम विच हैव देयर ऑप्टिमम pH at the acidic ranges. Lysosome contain different hydrolytic enzyme which have their optimum pH at acidic range. Enzyme degraded by this way do not require ubiquitination. In this process only the lysosomal enzyme will be there. They will take the enzyme or peptide and it will break into a small peptides and there will be डिग्रेडेटेड. इस प्रोसेस में कोई भी यूनिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि कोई भी ऐसा प्रोटीन मॉलिक्यूल वहाँ नहीं मौजूद है जो उसमें उसको डिग्रेडेट करने में हेल्प करे, और यहाँ पर एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सो
देयर इज़ अ टू प्रोसेस फॉर द डिग्रेडेशन, प्रोटोसोमल डिग्रेडेशन जहाँ पर यूनिक्यूटिन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी और ATP रिक्वायर्ड होगा, और दूसरा हमारा है लाइसोसोमल डिग्रेडेशन जहाँ पर किसी भी तरह की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स नहीं है और यहाँ पर ATP की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. So this was all about the regulation of the enzyme and degradation of the enzyme. Hope you understand the lecture. Thank you.